Okay, great. Now, okay, good morning. So, हामीले physical units method last day discuss गरेका थियौं and we discussed at length how we will be doing it. र एउटा दुईटा मात्रै क्वेशन थियो, त्यसैले तपाईहरुले त्यो पनि गर्नुभयो होला आफ्नो क्यापेसिटीमा है. As I said in the first class itself that there will be several methods which we are going to discuss in this chapter. And all of them are such as if situation based to be applied. One situation ma will be applying physical units method, then another situation will be applying some other method, and so on. This कारणले गर्दा हामीले मेथड को चुज गर्दाखेरि सिचुएसन लाई जरुर ध्यान दिन्छौं. कतिपय क्वेशन मा एक्सप्रेस गरे हुन्छ कि तपाई यो मेथडबाट गर्नुस् भने कतिपय सिचुएसन क्वेशन मा चाहिँ त्यस एक्सप्रेस गरे हुँदैन कि यही मेथडबाट तपाईले एप्लाई गर्नु, यही मेथड गर्नुस् भनेर मेन्सन गरे हुँदैन. मेन्सन नगरेको बेलामा हैन त्यस्तो कुनै स्पेसिफिक मेन्सन छैन भने हामीले कसरी गर्ने हैन. त्यो बेलामा हामीले सिचुएसनलाई स्टडी गर्छौं. क्वेशनबाट नै त्यो सिचुएसन्सको कहीं न कहीं रेफरेन्सहरु आइरा हुन्छ अनि त्यो सिचुएसनलाई हेरेर हामीले एउटा एप्रोप्रिएट मेथड हामीले त्यसमा अप्लाई गर्छौं है. सो त्यो सिचुएसन स्पेसिफिक अब्जर्भेसन गर्नु भन्दा पहिला हामीले सही मेथड बुझ्नु पर्यो कि कुन मेथडमा हामीले कसरी कस्ट अलोकेट गर्छौं भनेर. सो वन बाइ वन हामी सबै मेथड पढ्ने छौं र सबै मेथडमा पढ्ने बेलामा त्यसको सुटेबिलिटी पनि हामीले डिस्कस गर्ने छौं. जसरी फिजिकल युनिट्स मेथडमा हामीले भन्यौ कि त्यो बेलामा सुटेबल हुन्छ जब सबैको युनिट अफ मेजरमेन्ट जति पनि जोइन्ट प्रोडक्ट्स त्यसबाट आइरहेछ सबैको युनिट अफ मेजरमेन्ट सेम छ, नम्बर 1. अर्को चाहिँ प्राय त्यो सबै प्रोडक्ट्सहरुको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स सिमिलर छ. इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स सिमिलर भयो भने कहीं न कहीं सिमिलर सेलिङ प्राइस नै कस्टमरले दिइरा होला. तर कति सेलिङ प्राइस छ त्यो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन. हामीले मात्र तिनीहरुको फिजिकल भोल्युम थाहा छ. त्यो फिजिकल भोल्युम थाहा छ भने फिजिकल भोल्युमकै रेशियोमा यसलाई बाँड्दियौ हामीले, त्यसैको बेसिसमा यसलाई हामीले बाँड्दियौ हैन. र बाँड्ने क्रममा हामीले त्यसमा नर्मलिटी एब्नर्मलिटीको लसेसहरु जुन छ त्यसलाई पनि कहीं न कहीं कन्सिडर गरेर एलोकेट गर्ने गर्छ. त्यो सबै हामीले लास्ट क्लासमा डिस्कस गर्यौ है. आज अरु मेथडहरु त्यो लागौँला है. Second method जुन आज हामी डिस्कस गर्छौं that is average unit cost method. एभरेज युनिट कस्ट मेथड भनेको जसरी तपाईले फेज 1 मा हामीले प्रोसेस कस्टिङ गर्दाखेरि कस्ट कसरी निकाल्थ्यौ हैन, ग्रॉस कस्ट हैन. हामीले के लेख्थ्यौ, ग्रॉस कस्ट माइनस रिकभरी फ्रम नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाइ के लेख्थ्यौ भन्नुस्, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस. ये लेख्थ्यौ. इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस किन लेख्थ्यौ, बिकज हामीलाई एक्सपेक्टेड आउटपुट बाट कति कस्ट इन्कर हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि है. यो भनेको के हो, एक्सपेक्टेड आउटपुट. म अर्को शब्दमा यो भनौं कि आउटपुट विदाउट या विदाउट एब्नर्मलिटी. यही भन्थ्यौ हामीले राइट. सो यो मेथडमा पनि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि र अब त सिचुएसन तपाईले यदि अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सुरु गर्नु भएको छ बिस्तारै भने अब तपाईलाई क्लियरिटी आइरा होला. हामी यो जुन डिनोमिनेटर जुन राखिरा छौं जुन डिभाइड गर्नको लागि त्यो डिनोमिनेटर जहिले पनि हाम्रो जुन आउटपुट आएको छ त्यसमा एब्नर्मल नभएको भए, एब्नर्मलिटी नभएको भए के आउटपुट आउँथ्यो त्यसलाई हामीले कन्सिडर गर्छौं राइट. यदि सिचुएसनमा गएर कुनै मल्टिपल थरीको आउटपुट आएको छ, कुनै आउटपुट 100% कम्प्लिट छ, कुनै आउटपुट 100% कम्प्लिट छैन भनेपछि हामी इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स गरेर राख्छौं. सो बिफोर एब्नर्मलिटी नर्मल लसलाई त माइनस गर्ने तर बिफोर एब्नर्मलिटी व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउटपुट, व्हाट इज द आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट जुन आएको छ त्यसमा एब्नर्मल लाई यदि एडजस्ट गरेन भने एब्नर्मल नभएको भए के आउटपुट आउँछ, एब्नर्मलिटीलाई पनि कहीं न कहीं यसमा एड ब्याक गर्ने. त्यो सिचुएसनको आउटपुटबाट हामीले ग्रॉस कस्टलाई
तो यो मिनिट मेथडले पनि के भनिरहेछ, दिस मेथड इज अल्सो फलोइङ द सेम पाथ व्हिच इट सेज तपाईले कति जोइन्ट कस्ट, जुन मैले यहाँ टोटल कस्ट लेखेको थिए, जोइन्ट कस्ट अफ कोर्स नेट अफ गर्दिने नर्मल लस को रिकभरी छ है। यदि नर्मल लस को रिकभरी छ भने नेट अफ गर्दिने, हटाइदिने त्यसबाट डिवाइडेड बाइ जुन आउटपुट आएको छ, आउटपुट जुन आउटपुट आएको छ त्यो आउटपुट भनेको नर्मल लस मात्रै एडजस्ट गरिकन, आउटपुट आफ्टर एडजस्टमेन्ट अफ नर्मल लस, नर्मल लस को एडजस्टमेन्ट पछिको जुन आउटपुट छ त्यसले तपाईलाई डिवाइड गरिदिन्छ। म त्यही एक्जाम्पल म फेरि रिपिट गरे, हिजो अस्ति हामीले एक्जाम्पल लिएको थियौं, हामीले जोइन्ट कस्ट इन्कर गरेका थियौं 9,50,000 है। तीनवटा प्रोडक्ट ए बी र सी थियो। एउटा प्रोडक्टमा हामीले कति युनिट्स पाएको थियौं, 4,000, बी मा 3,000 र सी मा 2,500, यसरी 9,500 युनिट्स हामीले पाएको थियौं। र हामी भनेको थियौं कि 10,000 इनपुट हामीले राखेको छौं, जसको 5% नर्मल लस हुन्छ। So if that is the situation, हामीले फिजिकल युनिट मेथड गर्दाखेरि पनि टोटल कस्टलाई यिनीहरुमा बाट्ने काम गर्यौं। यो मेथडमा पनि टोटल कस्टलाई नै यिनीहरुमा बाट्छौं, तर त्यहाँ बाट्ने मेथोडोलोजी फरक थियो, क्याल्कुलेसनको स्टेप्स फरक थियो। यहाँ हामीले यो बाट्ने बेलामा हामीले के गर्छौं, सिम्पल एभरेज कस्ट निकाल्छौं। किन एभरेज कस्ट निकाल्दियो कि 81, बिकज यस मेथडले पनि फिजिकल युनिट्स मेथड चाहिँ यिनी सबैको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स सिमिलर छ भनेर मान्छ र यी सबैको युनिट अफ मेजरमेन्ट सेम छ भनेर मान्छ। यदि यिनीहरुको युनिट अफ मेजरमेन्ट सेम नभएको भए, यदि यिनीहरुको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स सिमिलर नभएको भए, हामी फिजिकल युनिट मेथड पनि युज गर्न सक्दैन थियो होला र यो मेथड पनि युज गर्न सक्दैन। त्यो मेथड र यो मेथडको आउटकम, मतलब यो मेथड अप्लाई गरेर आउने रिजल्ट सेम नै छ, सेम नै रहन्छ, मात्रै मेथोडोलोजी क्याल्कुलेसन को तरिका मात्रै फरक हो। So under that method and this method, offshore answer will remain the same, the steps for us. So circumstances will be the same, assumptions behind that method is the same, only how to calculate कुन जुन steps हरु छ त्यो steps फरक हुन गयो है। So यहाँ यदि हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने पहिला म एभरेज युनिट कस्ट निकाल्छु। एभरेज युनिट कस्ट 9,50,000, कुनै नर्मल लस को रिकभरी नभएको हुनाले पुरा 9,50,000, सबै युनिटहरु कति छ आउटपुट 10,000 इनपुट लगाएको थियो, 5% नर्मल लस, 95 से हुनु पर्ने, 695 से, तो 95 से लाई डिवाइड गर्नुस्, पर युनिट कति आयो 100। अब पर युनिट थाहा भइसकेपछि कस्ट अफ प्रोडक्ट ए 4,000 युनिट छ into 100, cost of product B 3,000 युनिट छ into 100, cost of product C 2,500 युनिट छ into 100। सो जसरी हामीले फर्स्ट मेथडमा गरेथ्यौं, सेम अप्रोच भए पनि क्याल्कुलेसन अलि डिफरेन्ट तरिकाले हामीले गर्नु पर्यो। That is the only difference you will be finding out. क्लियर छ? क्लियर छ? क्लियर छ भने म यसमा अब बिस्तारै अलिअलि मसाला थप्दै जान्छु, तपाईहरुले भन्नु पर्यो। मात्रै तपाई एभरेज युनिट कस्ट निकालिसकेपछि यिनीहरुको कस्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ है। ल यस ओके। सो मानौ अब मैले भने कि मेरो नर्मल लस 5% थियो, तर यहाँ आउटपुट चाहिँ यति आयो 3,000, 4,000, 3,000 र 2,000। इफ आई से यदि क्वेशन में स्पेसिफाई गरेको छ विद्या
त्यसो भए त्यही मेथड फलो गर्ने। तर साइलेन्ट छ भने, साइलेन्ट छ तर युनिट अफ मेजरमेन्ट सबैको सेम छ अनि सबैको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स सिमिलर छ भने हामी यी दुवै मेथड मध्येबाट कुनै मेथड फलो गर्न सक्छौँ। आइदर अफ द मेथड यु क्यान युज, मतलब एजम्पसन लिएर त्यो क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। त्यसैले मैले भने हामीले मेथड कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा पहिला सिकौँ, त्यसपछि क्याल्कुलेसन त हामी गरि नै हाल्छौँ है। ल, in this situation, when the output we obtained was 4,000 units of A, 3,000 units of B, and 2,000 units of C, whereas input was 10,000 units and there was expectation of 5% normal loss. Expectation of 5% normal loss was there. अब भन्नुस् त प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी र प्रोडक्ट सी को भ्यालु कति हुन्छ? यहाँ प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी र प्रोडक्ट सी को भ्यालु 100 रुपैयाँ पर युनिट को रूपमा भएको थियो। अब यो सिचुएसनमा जब इनपुट 10,000 भए पनि आउटपुट चाहिँ घट्या छ। आउटपुट 4,000, 3,000 र 2,000 टोटल 9,000 मात्रै आएको छ। 5% मात्रै नर्मल लस थियो भने अब कस्ट पर युनिट कति हुन्छ? $100 नै हुन्छ। ग्रेट, 100 नै हुन्छ। किन? बिकज एब्नर्मलिटीलाई हामीले प्रोडक्टको कस्टिङमा कन्सिडर गर्नु भएन, राइट? सो त्यसको लागि क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा हामीले ध्यान राख्ने कि यहाँ नर्मल लस त हामी कन्सिडर गर्छौं। फर्मुला कसरी बनाए मैले? आउटपुट हेर्नुस् है माथि, एक्चुअलमा आएको आउटपुट प्लस एब्नर्मल लस माइनस एब्नर्मल गेन, यो ध्यानमा रहोस्। सो हामीले डिभाइड गर्ने बेलामा जसरी यो क्वेशनमा 9,000 आउटपुट छ तर 500 एब्नर्मल लस छ नि, त्यसले डिभाइड चाहिँ 9500 ले नै हुन्छ। यस, एब्नर्मल लसले गर्दा प्रोडक्टको कस्टमा इम्प्याक्ट गर्नु मिलेन, राइट? भेरी गुड। सो त्यस अनुसार यसको कस्ट 100 रुपैयाँ भयो अनि यो 4 लाख रुपैयाँ, यो 3 लाख रुपैयाँ, यो 2000 युनिट को 2 लाख रुपैयाँ र अर्को एब्नर्मल लस को पनि हामीले 500 युनिट को एब्नर्मल लस छ त्यसको पनि 50,000 रुपैयाँ। भेरी गुड। सो सिम्पल, हामीले जोइन्ट कस्ट नेटिङ अफ नर्मल लस को रिकभरीलाई डिभाइड केले गर्ने? एक्चुअल आउटपुट एब्नर्मल लस माइनस एब्नर्मल गेन। भेरी गुड है। म यो एक्चुअल आउटपुट, एब्नर्मल लस, एब्नर्मल गेन जुन लेखिरहेको छु, अफ कोर्स त्यो इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स हुनु पर्यो। बिकज जोइन्ट प्रोडक्ट भएपछि प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी यदि 100% कम्प्लिट छ भने इट मीन्स वन इनपुट को वन आउटपुट नै बन्छ। यस बन्छ नि, कस्ट अब्जर्भ गर्दाखेरि वन युनिट को वन आउटपुट बन्नु, तर नर्मल लस त हामी माइनस गर्छौं नि। 10,000 इनपुट थियो, 10,000 आउटपुट हामीले लेखेन नि प्रवीण, हामीले 9500 लेखिरहेको छु। किनभने 500 युनिट त लस जान्छ। नर्मल लस मात्रै कस्टिङमा कन्सिडर गर्ने, नर्मलिटीको कस्ट प्रोडक्टको कस्टमा कन्सिडर नगर्ने भन्ने कुरा हामी कतियौं दिनदेखि डिस्कस गर्दै आइरहेको छु। त्यही लजिकलाई म क्यास्केड गर्दै अगाडि बढाइरहेको छु है। सो यहाँ जुन आउटपुट लेखिरहेको छु, नट द फिजिकल आउटपुट, रादर इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स अफ द आउटपुट। अब प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी तीनटैलाई जोडेर मैले आउटपुट लेखेँ 9,000। तर 9,000 यहाँ जुन मैले लेखिरहेको छु, इट डज नट मिन 9,000 अफ फिजिकल युनिट्स। यदि कुनै कारणवश यिनीहरूको इक्विभ्यालेन्सी कम छ भने हामी इक्विभ्यालेन्सीमा लग्ने, इक्विभ्यालेन्ट युनिट्समा लेख्ने बेला है। ल, क्लियर छ? यो गर्न सक्नुभयो तपाईहरुले? यसैमा मैले भने कि मानौ हाम्रो 10,000 युनिट इनपुट थियो अनि मेरो आउटपुट चाहिँ आइदियो 2800 प्रोडक्ट सी को। त्यो केसमा कस्ट पर युनिट कसरी निकाल्नुहुन्छ भन्नुस्? What would be cost per unit? What would be cost per unit? Will it still be the same? Will it still be the same? Yes. 9,50,000 divided by सबै जोडेपछि 4, 3, 7, 2, 9800। तर यसमा एब्नर्मल गेन छ। 9500 को ठाउँमा 9800 आइदियो, 300 एब्नर्मल गेन भयो। तो 100 रुपीस
अब क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा 2.8 लाख र लास्टमा एब्नर्मल लसको ठाउँमा एब्नर्मल गेन भयो 300 युनिटको 100 रुपीस को दरले 30,000। यस निहारिका ग्रेट है ल। अब यही सिचुएसनमा इफ आई से दैट वी obtained 4,000 units of A, 3,000 units of B, 2,500 units of C, or maybe I'll take 2,000 units of C, right? But this was 100% complete, this was 80% complete, and this was 60% complete. This is the situation. What would be the cost per unit? Quickly, Vanus. So what would be the cost per unit? This is completeness, eh? Degree of completeness. Degree of completeness यदि दिएको छ, so cost per unit कति हुने भयो? ले भनिरहेछ 125 है। उसको नामै यस्तै छ, के गर्ने? नेम इज त्यो कुन मुभीहरुमा भूतवाला मुभीहरुमा हुन्छ नि, त्यही हो। सो तपाईहरुले जुन इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स निकाल्ने गर्नु भएको थियो नि, त्यो मात्रै वर्किङ नोटमा गर्नु पर्यो, त्यसलाई आउटपुट बनाउनु पर्यो है। सो त्यसैले पहिला त फिजिकल युनिट्स पहिले कम्पाइल गर्नुस्, सानो स्टेटमेन्ट हामी बनाउने छौं है। एउटा प्रोडक्ट ए को बी सी नर्मल लस एब्नर्मल गेन, यस केसमा एब्नर्मल लस टोटल 10,000 युनिट थियो। फिजिकल को पहिला मैले कम्पाइल गरे ताकि थाहा हो हामीलाई एब्नर्मलिटी छ कि छैन है। फिजिकल युनिट्स ए मा 4,000 थियो, बी मा 3,000 थियो, सी मा 2,000 थियो। नर्मल लस 500 हुन्छ, एब्नर्मल लस कति भइराछ? 500 एब्नर्मल लस पनि भइराछ है। यसको कम्प्लिटनेस, पर्सेन्टेज अफ कम्प्लिटनेस यसको दिएको छ, यो 100% कम्प्लिट छ, यो 80% कम्प्लिट छ, यो 60% कम्प्लिट छ। नर्मल लस त हामीले बियर गर्नु छ, त्यसले नर्मल लसलाई 0 राख्नुस् हैन। एब्नर्मल लसमा क्वेशनमा नभनेको हुनाले त्यो स्क्रैप को पनि डिग्री अफ कम्प्लिटनेस दिएको, त्यसलाई पनि हामी कन्सिडर गर्ने छौं। सो यसलाई 100 मान्नुस्। सो इक्विभ्यालेन्ट युनिट, इक्विभ्यालेन्ट आउटपुट है। इक्विभ्यालेन्ट आउटपुट कति आयो त? 4,000, 2,400, 1,200, 500। 4,000, 2,400, 1,200, 36, 76 कति भयो? 81 से 8,100। yes, so then cost per unit या average unit cost would be 9,50,000 divided by 8,100। कति आउँछ cost per unit? कति आयो cost per unit? 117.28 right, 117.28 right। त्यसपछि यो एउटा वर्किङ नोट क्विकली गरेर then you can calculate allocation of joint cost, product A लाई, product B लाई, product C लाई र एब्नर्मल लस लाई है। यो जुन 117.28 117.28 117.28 117.28 multiplied by यसको इक्विभ्यालेन्ट युनिट 4,000 छ, then 4,000, यसको 2,400, यसको 1,200, यसको 500 राइट। यसरी तपाई यो 117.28 ले मल्टिप्लाई गरेर टोटलमा 9,50,000 लाई बाँडफाँड गरिदिनु। राउंडिंग ऑफ को लागि झगड़ा न गर्नुस् है। तुम लोग झगड़ा करोगे तो मैं रो दूंगा।
अब मैं रो दूंगा तो देखो तुम्हारे साथ रोना, टीचर को रुलाओगे तुम लोग। बच्चे नहीं रोते करके ऐसे। हाँ होइन तपाईले के गर्नु भएको थियो, मैले तपाईले भनेकै 28 लेखे, अब राउन्डिङ अफको झगडा तपाईले आफै गर्नु, जे आउँछ तपाईले अप्रोच थाहा पाउनु भयो। हामीले के लेख्यौं कि टोटल जोइन्ट कस्ट जुन लागेको छ, यदि नर्मल लसको रिकभरी छ भने नर्मल लसको रिकभरी माइनस गर्ने, डिवाइडेड बाइ इक्विभ्यालेन्ट आउटपुट लेख्ने। इक्विभ्यालेन्ट आउटपुट लेख्दाखेरि अब यो डेसिमलमा आइरहेछ 117.8 117.28 के आइरहेछ भन्ने कुरा त अब हजुरहरूले नै टुङ्ग्याउनु पर्यो नि। हो यस यस निहारिका 28 भन्ने 28 नभन्ने। ओके सर, ओके सर, ओके सर। धन्यवाद निहारिका, रिमाइन्डिङ मी। मलाई पनि थाहा थियो, तर अब कहिले काहीँ हुन्छ नि फ्लोमा 28 भन्ने गर्छौं। कोही बात नहीं, मैडम सर हुन्छ नि, त्यो मुभी हेरेको थिएँ नि भारत भन्ने मुभीमा, मैडम सर त्यसैले मैडमलाई मैडम सर पनि भनिन्छ है। ल ल यता हेरौँ, नागिन फेरि को हो यो बदमास बालकहरू। गब्बरले भनिरहेको छ या नर्मल लसलाई एडजस्ट गर्नु पर्यो नि भाइ। जुन 100 डिग्री अफ कम्प्लिटनेस में नर्मल लस को ठाउँ 0 राख्नुको मतलब अटोमेटिक एडजस्ट भइदिएन, अटोमेटिक 0% गर्ने बित्तिकै एडजस्ट भइदिएन। भयो कि भएन भन्नुस् है? भइदियो, आफै घटिहाल्यो नि त्यसको कारणले है। ल सो सिम्पल है। यदि क्वेशन में डिग्री अफ कम्प्लिटनेस को सिचुएसन अब यसमा यो पनि आउन सक्छ। ल मैले भने जोइन्ट कस्ट में मटेरियल 5 लाख रुपीस, लेबर 3 लाख रुपया, एक 1,50,000, टोटल 9,50,000 यसरी छ है। र अब 10,000 युनिट्स हामीले इंट्रोड्यूस गरेका छौं, 10,000 युनिट्स हामीले इंट्रोड्यूस गरेका थियौं। यसको लागि कस्ट ब्रेकअप यसरी छ प्रोसेस, जोइन्ट प्रोसेसमा है। सबै कमन जोइन्ट प्रोसेसिङ भयो र जोइन्ट प्रोसेस गर्दाखेरि हैन यसबाट तीनवटा आउटपुट निस्क्यो, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी है। प्रोडक्ट ए चाहिँ 4,000 युनिट्स निस्क्यो, प्रोडक्ट बी चाहिँ 3,000 युनिट्स निस्क्यो र यो 2,800 युनिट्स निस्क्यो है, फिजिकल युनिट्स है। नर्मल लस यो प्रोसेसमा 5% नर्मल लस हुन्छ भनेर प्रोसेसको फिचर रहेछ है। अब 4,000, 3,000, 2,800 फिजिकल युनिट्स निस्क्यो, तर यसको डिग्री अफ कम्प्लिसन मटेरियल को लागि 100%, यो पनि 100% नै मटेरियल मा लागेको छ रे। तर लेबर को लागि यसमा 100% छ, यसमा 80% छ, यसमा 70% मात्रै छ। ओभरहेड्स को कुरा गर्ने हो भने यसमा 100% छ, यसमा 75% छ र यसमा चाहिँ 50% छ। अब यो सिचुएसन भयो भने हामी कस्ट पर युनिट कसरी निकाल्ने भन्नुस् त। देन व्हाट वुड बी द भ्यालु अफ दिस प्रोडक्ट ए। यसको यो 9,50,000 लाई बाट्नु भयो भने कति अमाउन्ट यसमा आउँछ, कति अमाउन्ट यसमा आउँछ र कति अमाउन्ट यसमा आउँछ। ल क्विकली गरेर देखाउनुस्। ल भन्नुस् त, under average unit cost method what would be the value of product A which in physical 4,000 units are there, value of product B which in physical 3,000 units are there, and which for value of product C which is in 2,800 units physically, but the completeness are different.
One is 100, 70, 50. There is 180 and 75. There is 100, 100 and 100. Lala, quickly. So I'll just check who is the first one. जाले आंसर फटाफट बन से. अभी तक तो नोट में देख लेते थे आंसर, फटाफट बोल देते थे. अब तो भाई नोट भी नहीं है. कुछ क्वेश्चन तो मैं बचा के रखता हूँ ना अपने दिमाग में, और दिमाग से ही क्वेश्चन निकालता हूँ. और ऐसे क्वेश्चन में तो आप लोगों से देखते हैं कौन जल्दी बनाता है और करेक्ट बनाता है. जल्दी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल दो सर मैंने तो सबसे पहले बोला था, है ना, फिर गलती हो जाएगा. गलती बिना एकदम करेक्टली कौन फटाफट बताता है. What is the value of 4,000 physical units of product A, which is 100% complete in all respect? Similarly, what would be the value of 3,000 units of B, which is 180 and 70% is complete with respect to material, labors, and overhead respectively? Similarly, what would be the value of 2,800 units of C, which is 100%, 70%, and 50% completed with respect to material, labors, and overheads respectively? चलो जी, फटाफट बनाने का. हम एक गिलास पानी पी के आते हैं. के निकाल्नु को तपाईहरुले फेरि मैले चाहिँ कस्ट पर युनिट होइन बल्कि भ्यालु सोधिरहेको थिएँ. व्हाट वुड बी द जोइन्ट कस्ट allocated for 4,000 units of product A? 52.63, 37.22, 20.41. अब ठीक छ नि, म अहिले राम्ररी बोले नि अब.
डेसिमल के बाद एक एक करके बोलना है, मैंने आज सीख लिया। चलो बढ़िया है। वैल्यू पूरा बताना है। अभी तक तो आप लोगों ने सिर्फ शायद पर यूनिट कॉस्ट निकाला है। और अभी तक शीतला, पूनम, ये थर्ड दनदीप, इसको नाम ही बोलना मत, थर्ड दनदीप, थर्ड दैन मनदीप, आई डोंट नो। नाम भी बिगाड़ने के लिए इन लोगों के पास इतना तरीका है ना, कुछ भी लिख देते हैं। जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। क्विकली भन्नुस् न, कति भ्यालु भयो त? यसमा हामीले स्टेटमेन्ट अफ इभ्यालुएसन सम्म गएर भ्यालु निकाल्छौं नि, त्यहाँसम्म लग्नु पर्यो नि यो क्वेशनलाई, त्यही त्यसको भ्यालु हुन्छ है। सो टाइम लाग्यो धेरै, छिटो छिटो। ल, एक जनाले पीके है क्या, उसने भन्यो पीके है के 4,99,985। मटेरियल को, हे भगवान, अरे बाबा, प्रोडक्ट ए और बी और सी का वैल्यू निकालने के लिए बोला था, इसने मटेरियल का वैल्यू निकाला, ओवरहेड का वैल्यू निकाला और लेबर का वैल्यू निकाला। गजब है मेरे दोस्त, गजब हो मेरे दोस्त। फर्स्ट हामीले के गर्नु पर्यो, हामीलाई थाहा छ है, हामीलाई के थाहा छ कि एभरेज युनिट कस्ट इज इक्वल टु डिवाइडेड बाइ आउटपुट, यही नै गर्नु छ। तर आउटपुट भनेको नर्मल आउटपुट, नर्मल आउटपुट हामीले डिवाइड गर्नु छ है। तर यो नर्मल आउटपुट निकाल्दाखेरि हामीलाई यदि मानौ यसरी डिग्री अफ कम्प्लिटनेस फरक फरक मटेरियल लेबर ओभरहेड्स को छैन भने हामी टोटल जोइन्ट कस्ट निकाल्दिन्छौं है, टोटल जोइन्ट कस्ट लेखिदिन्छौं। तर यदि फरक फरक छ भने सेपरेटली निकालौ, जोइन्ट कस्ट डिवाइडेड बाइ आउटपुट लेबर को लागि, सो मटेरियल कस्ट डिवाइडेड बाइ आउटपुट, यसमा मटेरियल कस्ट पर युनिट निस्किन्छ। त्यसपछि लेबर कस्ट डिवाइडेड बाइ आउटपुट अनि लेबर कस्ट पर युनिट निस्किन्छ। त्यसपछि ओभरहेड्स डिवाइडेड बाइ आउटपुट, त्यसपछि ओभरहेड पर युनिट निस्किन्छ। अब यो मटेरियल को निकाल्नु हो, यो लेबर को निकाल्नु हो, यसको इक्विभ्यालेन्ट युनिट्सले मल्टिप्लाई गर्नुस्, यसको पनि इक्विभ्यालेन्ट युनिट्सले मल्टिप्लाई गर्नुस् र यसलाई पनि इक्विभ्यालेन्ट युनिट्सले मल्टिप्लाई गर्नुस्। तिनटैको भ्यालु निस्किन्छ, तिनटैलाई जोड दिनुस्, प्रोडक्ट ए को, बी को र सी को भ्यालु निस्किन्छ है। अब हेर्नुस्, अहिले भर्खरै तपाईहरुले फरक फरक आन्सर निकाल्न सुरु गरिदिनु हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा तो है कि नहीं? लोचा है तो लोचे को समाधान करना है। जी मैडम सर, देखो मैडम सर का आंसर अलग निकला, 4,31,680 है। अभी ऊपर वाले का आंसर मणिशंकर अय्यर का आंसर अलग है, युवराज केसी का आंसर अलग है। अभी तो मिस्टर 360 का आंसर और अलग निकल के आया, बल्ले बल्ले हो गए, सबका आंसर अलग अलग। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ किसका आंसर मैं मानूं? मैं धर्म संकट में पड़ गया हूं, मैं पूर्ण रूप से धर्म संकट में पड़ गया हूं। अभी तक सब लोग 3 का वैल्यू बताया, अगर नोट 4 में भी अभी चल रहा है, अभी नोट 10 का जमाना में नोट 4 से लिख रहा है। बताओ, आप करके देखो सर, तभी पता चलेगा कौन सही है। यस निहारिका, यस मैडम सर। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ
स्टेटमेंट अफ पहिला त हामीले इक्विभ्यालेन्ट आउटपुट निकाल्नु पर्यो है। तब न इक्विभ्यालेन्ट प्रोडक्सन या इक्विभ्यालेन्ट आउटपुट निकाल्नु पर्यो, फरक फरक भएको हुनाले। स्टेटमेन्ट अफ इक्विभ्यालेन्ट आउटपुटमा अब हामीसँग प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट ए पनि छ, बी पनि छ, सी पनि छ, तीनवटा प्रोडक्ट छ। नर्मल लस पनि भइरहेछ। टोटलमा 10,000 इनपुट हामीले लगाएको छौं है, र 10,000 फिजिकल इनपुटमा, फिजिकल युनिट्समा प्रोडक्ट ए 4,000, प्रोडक्ट बी 3,000, प्रोडक्ट सी 2,800, प्रोडक्ट नर्मल लस त 500 हुन्छ भनेर 5% प्रोसेसमा लस हुन्छ भनेर क्वेशनले बनाएको थियो। सबै मिलाएर हुनु पर्ने, तर एब्नर्मल गेन देखियो -300 है। ल अब तीन थरीको कस्टको डिग्री अफ कम्प्लिटनेस फरक फरक दिएको हुनाले हामी इक्विभ्यालेन्ट आउटपुट सबैको फरक फरक तरिकाले निकाल्नु। पहिला मेटेरियलको, त्यसरी नै लेबरको र त्यसरी नै ओभरहेड्सको पनि निकाल्नु है। मेटेरियलको कति पर्सेन्टेज, देन इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स, पर्सेन्टेज इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स, पर्सेन्टेज equivalent units. Hey, I am discussing those circumstances which may come in practical life. तपाई यदि क्वेशन्स हेर्नुहुन्छ स्टडी मटेरियलमा अरु किताबहरुमा सायद यस्तो क्वेशन्सहरु दिएको छैन, but yes, in practical life those situations may also come. There is one process, you are getting multiple type of product, but they are not complete 100%. In all respect, maybe with respect to material they are complete, but with respect to labor they do not have 100% completeness for all the product. त्यो सिचुएसन मा त कस्ट एलोकेट गर्नु पर्यो। तपाईहरुले सिक्नु भएको छ, ए बी सी मेटेरियल को कुरा गर्नुहुन्छ, यो पनि 100% छ, यो पनि 100% छ, यो पनि 100% है। नर्मल लस मा तपाईहरुले थाहा छ कस्ट अब्जर्भ गर्नु छ भने 0 लेख्नु पर्यो। यो त एब्नर्मल गेन आयो, त्यो पनि 100%। त्यस अनुसार this is 4,000, this is 3,000, this is 2,800, this is 0, this is -300. Hence this comes 9,500. अब लेबर को कुरा गरौं। लेबर मा कति कति छ, 100, 80 र 75 छ। सो 100%, 80%, 75% र यो 100%। यो 4,000, यो 2,400, यो 2,100 हैन, यो 0, यो -300। सो कति भयो, 45 बाट 42, 8,200 है। ओभरहेड्स को कुरा गरौं। ए चाहिँ 100%, बी 75%, सी 50%, यो 0, this is 100%। so 4,000, 20, यो कति हुन आउँछ, 1,800 हो हैन, 1,800 हैन, 75% छ भने कति आउँछ, 3,000 को 75%, 2,250 आउँछ। अनि 2,800 को 50%, 1,400 आउँछ। यो 0, यो -300। यतातिर कति भयो, 22, टोटल 3650, 3350, तो 7,350, 7,350। ओके जी। ल यो निकालिसकेपछि अब त सेकेन्ड स्टेटमेन्ट क्विकली बनाउनुस् है। क्विकली सेकेन्ड स्टेटमेन्ट बनाउनुस् त। इतना हो गया तो आसान हो गया ना, है कि नहीं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। हे एलिमेंट्स के छ कॉस्ट को, मटेरियल छ, लेबर छ र ओभरहेड्स छ। ये तीनवटा एलिमेंट छ कॉस्ट को। सी को 50% लेखेको हैन, यहाँ मैले 50 त लेखेको छु।
50% थियो कि 70% थियो? ला बहेरा लहेरा 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 लहेरा, और रिकॉर्डिंग में जाके देख लेना मेरे दोस्त कितना परसेंट था। रितिकाले भन्छ 70%, निहारिका 50%, वीरेंद्र 50%। अब देखो भाई, आंखों का इलाज तो करना पड़ेगा ही, है ना। ओके, कोई बात नहीं। अगर परसेंटेज की वजह से आंसर, मैले त यहाँ 75% लेखेको छु र यहाँ 50% लेखेका थिए। झगड़ा नहीं करने का, झगड़ा नहीं करने का, झगड़ा नहीं करने का। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं। अभी मान के चलते हैं ये वाला परसेंटेज है तो क्या होगा, है सही। डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ प्रोडक्ट सी 175 रे 50 छ, 180 रे 75 छ, 100 100 र 100 छ। ओहो, 70% थियो। ओके, ला ला, ठीक है ठीक है, झगड़ा कर लिया मैं तुम लोग। ला ठीक है, इसको भी 70 कर देता हूँ। अब क्या क्या करूँ बताओ, तुम लोग जो कहोगे वो कर लेंगे। 70 करेंगे तो क्या होगा बताओ, होगा क्या इससे, क्या चेंजेस आएगा? इधर वाला में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, क्या चेंजेस आएगा? छोड़ देते हैं ना यार, 75 करके करते हैं। लो 75 करके करते हैं, करने दे, कोई दिक्कत नहीं यार। 70 से कर लेना आप लोग, है कि नहीं। ला कॉस्ट, अगेन यहाँ जो कॉस्ट हामी लेख्छौं त्यो आफ्टर नेटिङ अफ नर्मल लस रिकभरी लेख्छौं। तपाईलाई थाहै छ यो क्वेशनमा नर्मल लसको रिकभरी नदिएको हुनाले मटेरियल 5 लाख रुपीस, 3 लाख रुपीस र ओभरहेड्स 1,50,000 रुपैयाँ है। मात्रै यो 70% र 75% को कारणले यदि डिफरेंट आंसर आइरहेछ भने चलेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का। ये 9500 यूनिट्स छ, यो 8200 यूनिट्स छ, यो 7350 यूनिट्स है। त्यसो भए कॉस्ट पर इक्विभलेन्ट यूनिट कति भयो? यो कॉस्ट पर इक्विभलेन्ट यूनिट नै बेसिकली एभरेज यूनिट कॉस्ट हो, जो कि हामीले निकाल्न गइरहेछौं है। लड़ लो तुम लोग भाई, बंदूक बंदूक है कि नहीं तुम लोगों के पास? है तो बंदूक लेके मारो एक दूसरे के ऊपर गोली, कोई नहीं बचना चाहिए इस लड़ाई में, है? महाभारत होना चाहिए इसके अंदर, सब के सब साफ हो जाए इससे लड़ाई करते हो। मेरे पास है वंश गब्बर, ले गब्बर के पास तो होगा ही, नाम ही गब्बर है? ल कॉस्ट पर कति हुने भयो त्यसो भए क्विकली भन्नुस् त अब, हैं? है म म्युट गर्न सबैलाई अफ गरिदिन्छु ल है, कोही म्युट गर्न पाउँदैन, गरिदिउँ? टेक च्याटै गर्न पाउँदैन। लेखे पनि म इग्नोर गर्छु। ल भन्नुस् त, 5 लाख डिवाइडेड बाइ 9500, 52.63। त्यस्तै 3 लाख डिवाइडेड बाइ 8200, 36.58। त्यस्तै 1,50,000 डिवाइडेड बाइ 7,350, 20.40 है। यो अब निकालिसकेपछि अब प्रोडक्टहरुको भ्यालुएसन गर्नुस् है। थर्ड में चाहिँ स्टेटमेंट अफ इभ्यालुएसन, जुन तपाईलाई थाहा छ है। ओहो 4-1 लिख देता हूँ, लो झगड़ा मत करो, 4-1 लिख दिया है। लास्ट में गएर स्टेटमेंट अफ इभ्यालुएसन है। मलाई के को इभ्यालुएसन गर्नु छ, प्रोडक्ट ए बी सी र लास्ट में एब्नर्मल गेन को पनि गर्नु छ भने चारवटा कलम बनाउनुस्, ए को लागि, बी को लागि, सी को लागि र एब्नर्मल गेन को लागि। ए बी सी र एब्नर्मल गेन को लागि है। चार थरीको मेटेरियल सरी एलिमेंट चाहिँ छ, एलिमेंट्स material at the rate, labor at the rate, overheads at the rate।
ओवरहेड में आपने 20.41 बोला था, झगड़ा कर रहे थे मेरे से आप लोगों ने, सर 40 क्यों लिख दिया, 40 की जगह 41 लिखो, इसलिए मैंने 40 लिख दिया। अब क्या करे, तुम लोगों के सामने मुझे सरेंडर करना पड़ता है। लेकिन देखो ये 36 भी एक लिए लिखा है, 3658 भी लिखा है, अब इसमें पता नहीं कौन सही है। मैं एक 3658 लिखता हूँ, दो लोगों ने 58 लिखा है, एक 3 लोगों ने 58 लिखा है, बाकी ने 36 लिखा है, और 52.63 लिखा है। चलो 52.63 लिखते हैं, झगड़ा नहीं करने का, झगड़ा नहीं करने का। यस यस यस। सो 52.63, 36.58, 20.41 ઇન્ટુ એનો કોઈ ઇક્વિવેલન્ટ યુનિટ કદી થયો था भन्नुस् त प्रोडक्ट ए मा इक्विवेलेंट युनिट कति थियो, यो त 100% कंप्लीट सबैको लागि थियो नि, 100 लेबरमा पनि मटेरियलमा पनि ओभरहेडमा पनि। प्रोडक्ट ए को कुरा गर्ने भने सबै 100 थियो, तो इसको मतलब 4000 4000 र 4000 है। लेबर यो प्रोडक्ट बी को गर्ने भने 180 र 75 थियो है। सो 52.63, 36.58, 20.41 इन्टु यो 3000, यो 2400 र यो 2250 है। प्रोडक्ट सी को कुरा गर्ने हो भने 52.63, 36.58, 20.41 इन्टु है 175 र 70 छ भने 2800, 2114 है। अब नर्मल गेन को कुरा गर्नुहुन्छ भने कति युनिट थियो नर्मल गेन, 300 युनिट थियो, इन्टु 300, 36.58 इन्टु 300 र 20.41 इन्टु 300 र यो क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा यो सबै मिलाएर तपाईं हेर्नुहुन्छ भने यहाँदेखि यो सबै मिलाएर चारै मिलाएर कति हुन्छ, यो 9,50,000 नै हुन्छ। सो यो 9,50,000 ल्याउने क्रममा यदि कुनै कारणवश हैन, कुनै कारणवश यो एक्ज्याक्टली राउन्डिङ अफ को कारणले मिलेन भने एक एउटालाई एब्नर्मल गेनमा गएर त्यो राउन्डिङ अफ एडजस्टमेन्ट गरिदिनु होला है। क्लियर छ अब, क्लियर छ अब सबैलाई? ग्रेट, यही भ्यालु मैले सोधेको थिएँ तपाईहरुसँग। ओके जी, टाइम ज्यादा नहीं बर्बाद करते हैं, आप लोग बहुत टाइम बर्बाद करने लगते हो, फालतू के झगड़े में फंस जाते हैं, किसी का कोई भला नहीं होगा है? क्या लेके आए थे जो हम लेके जाएंगे, जो झगड़ों में बस फंस के रह जाएंगे, झगड़ा नहीं करने का है ना। तो यसरी यो मेथडबाट हामीले, मैले त असाइनमेन्टमा एकदम सिम्प्लिसिटी को साथ एउटा दुईटा क्वेशन मात्रै राखेको छु, तर प्र्याक्टिकली हेर्ने हो भने हामीले क्वेशन्स गर्दाखेरि या प्र्याक्टिकल लाइफमा सिचुएसन्सहरु फरक आउन सक्छ। यही मेथड अप्लाई गरे तापनि डिफरेन्ट सिचुएसनको कारणले हामीले डिग्री अफ कम्प्लिटनेसहरु पनि अप्लाई गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अदरवाइज यो मेथड यति सिम्पल छ, यसले सिम्पली के भन्न गर्छ, भाइ तपाईको जोइन्ट कस्ट कति छ त्यसलाई डिभाइड गरिदिनुस् आउटपुटले, मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुटले होइन कि एक्चुअल आउटपुटले। एक्सपेक्टेड आउटपुटले डिभाइड गर्नुको मतलब नर्मल लस मात्रै माइनस गरेर आउने आउटपुटले डिभाइड गरेर एभरेज युनिट कस्ट निकाल्नुस्। त्यस युनिट कस्टले प्रोडक्ट ए लाई, प्रोडक्ट बी लाई, प्रोडक्ट सी लाई जति जोइन्ट प्रोडक्ट छ सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्, टोटल कस्ट एलोकेट भइहाल्यो है। ल एउटा सानो क्वेशन तपाईहरुको असाइनमेन्टमा थियो कि तपाईहरुले अब क्विकली त्यो क्वेशन गर्दिन सक्नुहुन्छ मेरो उपकारको लागि। क्या आप तैयार हैं? क्या आप कर सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं? आप अगर कर सकते हैं तो क्विकली करके बताइए, देख के बताइए। इतना सिंपल क्वेश्चन तो जिंदगी में, इतना आसान क्वेश्चन जिंदगी में बहुत कम मिलता है, नसीबों को मिलता है। क्या आप लोगों को भी इतना ही आसान लग रहा है वो क्वेश्चन? फटाफट करके दिखाइए।
बल्ल एवरेज यूनिट कॉस्ट को हामी गरिरहेछौं। ये जो हंसने वाले जो चार मुंह बना के हंस रहे हैं ना, वो पूछ रहा कौन सा करे। चार चार मुंह का तो फोटो बना रखा है इसने, अपना नाम भी बिगाड़ रखा है। ये वाला क्वेश्चन बोल रहा हूँ बालक, ये वाला इलस्ट्रेशन 3 जो एवरेज यूनिट कॉस्ट का था। बाकी फर्स्ट तो हम लोगों ने कर लिया था ना लास्ट क्लास में ही। बालक ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बालक ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 1,20,000 का कॉस्ट इनकर किया है, प्रोडक्ट एक्स वाई जेड 3 तरह के आउटपुट निकल के आ रहे हैं, 2,000, 800 और 1,200, टोटल में 4,000। So average unit cost is basically 30 rupees. So hence joint cost of 1,20,000 shall be allocated amongst product X, Y and Z at the rate of rupees 30 per unit. That comes out to be 2,000 into 30, 2,000 into 30 60,000 and 8 से into 30, 8 से into 30, 8 से into 30 24,000 and similarly 12 से into 30 36,000, टोटल में 1,20,000। क्लियर छ? क्लियर छ? गर्न सक्नुहुन्छ? ओके ग्रेट। सो अगर यदि म फेरि अलिकता स्क्रिन शेयर गरे, यसमा हामीले यदि हेर्छौं भने जुन फिजिकल युनिट्स मेथड थियो नि, त्यही कुराले पनि भनिरहेछ कि भैया जब फिजिकल यूनिट्स ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट है तो नहीं यूज कर सकते, जैसे 1 किलो में दूसरा लीटर में है। ये भी क्या मानता है कि सभी का कस्टमर्स आर ऑफ हाई, मतलब एवरेज यूनिट कॉस्ट, मतलब 23 सर्कमस्टान्सेस को कुरा गरिरहेछ, बस क्याल्कुलेसन को तरिका फरक छ। तर यो मेथड फलो गर्यो भने नुकसान के होला? नुकसान के हुन सक्छ कि मानौ यदि इन केस सबैको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स सेम छैन, तर पनि हामीसँग अरु इन्फर्मेसन नभएको हुनाले हामीले यो मेथडबाट एलोकेट गर्दियौ भने बढी इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स भएको प्रोडक्टहरुको कस्टमरले बढी बेनिफिट पाउँछ भने लेस इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स भएको कस्टमरहरुले कम बेनिफिट पाउँछ है। मैले के भने कि मानौ हामीसँग इन्फर्मेसनको अभावमा, हामीसँग अरु इन्फर्मेसन नभएको हुनाले हामीले टोटल जोइन्ट कस्टलाई एभरेज युनिट कस्टको बेसिसमा बाँड्दियौ, किनकि उनीहरुको फिजिकल युनिट्स, युनिट अफ मेजरमेन्ट सेम थियो। युनिट अफ मेजरमेन्ट सेम थियो र अरु कुनै इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको थिएन। त्यो स्कार्सिटीमा हामीले के गर्यौं कि हामीले यही मेथडबाट हामीले लोकेट गर्दियौ। यसरी गर्यो भने अफ कोर्स जुन त्यो कस्टमरहरु फाइदामा रहन्छ, जसको लागि जसले त्यो प्रोडक्ट किन्छ, जसको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स बढी होला, हैन? त्यही उले भन्न खोजिरहेछ है। ल चलिए अब अगले मेथड की तरफ चले जी। निहारिका, शीतला, पूनम, सुधा, निहारिका, महेश, यस ओके जी, थैंक यू। Now the next method, if you see in your assignment, the name says points value method or survey method. hey नामबाट नै सबै थाहा कुरा हामी बुझ्न सक्छौं। यो नामले के भन्न खोजिरहेछ है? यसले भन्छ कि भैया ठीक है, आपने ज्वाइंट प्रोसेस किया, इसके अंदर आपने ज्वाइंट कॉस्ट इनकर किया, उससे आपने प्रोसेसिंग किया, चलो जी प्रोसेस हो जाओ हो जाओ हो जाओ, प्रोसेस हुआ, और सारे प्रोसेसिंग के बाद इसमें से 3 तरह के प्रोडक्ट्स निकले, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, है ना? और ये 4,000 यूनिट निकला, ये 3,000 यूनिट निकला, ये 2,500 यूनिट निकला। चलो यहां तक तो समझ में आया। लेकिन इस मेथड ने क्या चैलेंज किया उन दोनों मेथड को जो अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया था, फिजिकल यूनिट्स और एवरेज यूनिट मेथड। बोला ए मेथड्स, तुम लोग इतना भी नहीं दिमाग लगा रहे हो कि सीधा इसके आउटपुट के यूनिट्स के बेसिस पे बांट दे रहे हो। कम से कम सोच तो लो कि इस वाले प्रोडक्ट ए ने कितना रिसोर्सेज कंज्यूम किया है? इसने कितना रिसोर्सेज लिया है? जितना रिसोर्सेज लिया उसी के रेशियो में बांटना चाहिए ना। हमने टोटल कॉस्ट तो इतना इनकर किया, हामीले धेरै कॉस्ट इसमें इनकर गर्यो, तर यी कॉस्टहरु, यी रिसोर्सेजहरुबाट प्रोडक्ट ए ले कति रिसोर्सेज कन्ज्युम गरेको छ, प्रोडक्ट बी ले कति रिसोर्सेज कन्ज्युम गरेको छ, प्रोडक्ट सी ले कति रिसोर्सेज कन्ज्युम गरेको छ, त्यसलाई इग्नोर गरिकन
तिमी त्यसको फिजिकल युनिट र त्यसको कम्प्लिटनेस यताउता गरेर तिमीले बाँड्दियो हैं? बेवकूफ लोग, बेवकूफ दोनों मेथड हैं? तुम लोग ने एक चीज मिस किया, वो क्या था कि इसने कितना कंजम्पशन किया रिसोर्सेज का, इसने कितना कंजम्पशन किया इस रिसोर्सेज का, और इसने कितना कंजम्पशन किया इस रिसोर्सेज का। हाँ, बाद में तो दम लगा फिर, है ना? तो वो दोनों मेथड सरेंडर कर गया अपने आप को, है ना? बहुत बुरा हुआ उनके साथ। उसके बाद ये तीनों ने बोला अच्छा जी ऐसा करते, कैसे पता करें किसने कितना इकोनॉमिक रिसोर्सेज कंज्यूम किया? बोला ठीक है इंजीनियर को बुलाओ, बुलाओ इंजीनियर को, सारे वर्कर को बोला, पूछो। तो वो बोलता है सर ऐसा है ना, ये प्रोडक्ट में कंपैरेटिवली, इस प्रोडक्ट ए ने कंपैरेटिवली अगर चार गुना अगर रिसोर्सेज कंज्यूम किया है, इसने 2 गुना रिसोर्सेज कंज्यूम किया, और इसने 5 गुना रिसोर्सेज कंज्यूम किया। सो उनसे पूछा गया तो उसको बोला कि तुम इसका ऐसा करो, वैल्यू लगाओ इसको। तो बोलता है अगर इसने 2 गुना रिसोर्सेज कंज्यूम करता है तो ये 4 गुना करता है और ये 5 गुना करता है। तो रिसोर्सेज का कंजम्पशन के बेसिस पे इन सभी का वेटिंग किया गया, इन सब का रैंकिंग किया गया, कौन कितना खाता है। अगर आपको याद होगा हम एग्जांपल लिए थे ना क्लास में कि 2 दोस्त एक ही रूम में एक ही फ्लैट में रहते हैं और एक साथ किचन में बनाते हैं खाना और खाते हैं। अब देखने के लिए तो 2 दोस्त है, एक एक आदमी है, लेकिन एक आदमी खाता है 15 रोटी डेली और बेचारा दूसरा खाता है 3 रोटी डेली। अब 3 खाने वाला 15 का जितना खाता है उसके हिसाब का रेशियो में दोनों बराबर बराबर बांट दे तो अच्छा नहीं होगा ना, है ना? खाता तो दोनों है ना। तो ये भी खाता है ये भी खाता है, लेकिन ये अगर 4 गुना रिसोर्सेज खाता है तो ये 2 गुना रिसोर्सेज खाता है बेचारा। तो इसने बोला कि हम ऐसा करते हैं, इसको हम लोग फिजिकल जो आउटपुट है ना इसके रेशियो में ना बांट के हम क्या करेंगे, इसको वेट देंगे और इसके वेटेड रेशियो में बांटेंगे। तो 4 इंटू 4 ये 16,000 हुआ, ये 3 इंटू 2 6,000 हुआ, ये 25 से इंटू 5 12,500। बोला ठीक है, अब इसके रेशियो में बांटो इस ज्वाइंट कॉस्ट को, जो भी ज्वाइंट कॉस्ट आपने इनकर किया है इस ज्वाइंट कॉस्ट को इनके रेशियो में बांटो। बात में तो दम है ना, है कि नहीं बताओ, है नहीं? नहीं, इस मेथड ने क्या किया, दोनों को तो क्लीन बोल्ड कर दिया। वो दोनों मेथड को बोला तुम लोग सिर्फ फिजिकल 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 कर रहे थे, फिजिकल यूनिट्स फिजिकल यूनिट्स। भाई फिजिकल यूनिट्स कुछ नहीं होता है, उसने कितना रिसोर्सेज कंज्यूम किया उसको भी तो कंसीडर करना है ना, है नहीं? इसीलिए दे हैव कंसीडर्ड देयर रिसोर्सेज कन्जम्पसन को बेसिसमा। सो वर्करलाई बोलाएर सर्वे गर्ने, सर्वे गरेर उनीहरूलाई भन्ने भन त भन्ला सर, अरे सर इसको बनाने में 4 घंटा लगता है, 4 घंटा तक ये तो रिसोर्सेज पीता रहता है। तो ये तो 2 घंटे में बना लेते हैं और 2 घंटे में उसी हिसाब से रिसोर्सेज इसने कंज्यूम किया होगा। ये तो सर 5 घंटा लगा था, 5 घंटा तक रिसोर्सेज कंटिन्यूअसली कंज्यूम कर रहा था। तो सर इसको ऐसा कीजिए ना, इसको इसी रेशियो में इसी वेट में बांट दीजिए, हैं? चलो जी, जब उसने बोला तो उसका बात तो मानना पड़ा ना, आखिर काम करने वाले तो वही ले, है ना? तो काम करने कालु मकै खाने भालु, त्यसैले उसले भनेको कुरा त मान्नु पर्यो हामीले, हैन? तो थर्ड मेथडमा हेर्नुस् के भन्यो है, joint cost are portioned on the basis of point values, percentage assigned to the products according to the relative importance. The points values percentage are based on the technical survey of the all the factors affecting the production and distribution of joint cost. है ल हेर्नुस् यहाँ के भनिरहेछ, joint cost 1,20,000 छ, आउटपुट प्रोडक्ट X को 2,000, प्रोडक्ट Y को 800, प्रोडक्ट Y 800, प्रोडक्ट X 2,000 र प्रोडक्ट Z 1200 युनिट छ। तर point values assigned on the basis of technical survey, X लाई टेक्निकल point value 2 दिइराछ, Y लाई 10 दिइराछ र Z लाई 2.5 दिइराछ। सो क्विकली के गर्ने हामीले, त्यसको टेक्निकल भ्यालु को बेसिसमा फिजिकल युनिट्स त 2,800 1200 छ है, फिजिकल युनिट्स 2,800 र 1200 भए पनि त्यसको वेटेड युनिट्स निकाल्ने र यो वेटेड युनिट्स को रेशियोमा हामी 1,20,000 लाई यो 15,000 को रेशियोमा बाँट्नुहुन्छ भने पर युनिट कस्ट निकाल्ने, कस्ट पर वेटेड युनिट 1,20,000 डिवाइडेड बाई 15,000 8 रुपैयाँ, 8 इंटू 4,000, 8 इंटू 8,000, 8 इंटू 3,000, हेन्स 1,20,000 इज लोकेटेड। ल
क्विकली आफ्नो नोटमा बनाउनु त यसरी नै है 2 मिनेट दिए मैले है यति सजिला मेथडहरु छन् यो तीनटै त्यसैले एक्जामिनेसनमा यिनीहरुबाट आउने क्वेशनको प्रोबेबिलिटी कम भइहाल्छ धेरै सजिलो छ यो मेथड धेरै सजिलो छ यो मेथड त्यसैले एक्जामिनेसनमा यो क्वेशनबाट यो मेथडहरुबाट आउनु भनेको इट्स भेरी लेस लाइकली है भेरी लेस लाइकली भेरी लेस लाइकली है महेशले त गरि नै सक्यो एबनर्मलिटी भएको बेलामा पनि एबनर्मल लस भएको बेलामा पनि त्यो केसमा त्यसको पनि केही वेट असाइन गरिन्छ है किन त्यो पनि त स्क्रैप नै हो नि हैन र स्क्रैप नै हो सो स्क्रैप भएको युनिट्समा पनि त उले भन्ला सर ये तो सर 100% कंप्लीट हो के स्क्रैप हुआ है हैन कसैले भन्ला त्यो बेलामा त्यसको पनि कुनै न कुनै वेट असाइन गरिन्छ ठीक छ नि हारिका some weight shall be assigned so question will give you the information what would be the joint value weight for that सर्वे गरेर के भ्यालु असाइन गर्न सक्नु हो मैले भने नि त्यो सर्वे गरिन्छ प्र्याक्टिकल लाइफमा विल कल इन्जिनियर्स विल ब्रिङ वर्कर्स अन वन फ्लोर एन्ड आस्क देम they will say what is the value to be given sometimes ल वर्करले होइन भने ल ठीक छ त्यसको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स को बेसिसमा भ्यालु गर्नु छ भने हैन दिनु छ भने sometimes what they do they do that survey from customers है तीनटै प्रोडक्ट लिएर मलाई अहिले पनि याद छ एकचोटी गुडगाउँमा म जुन एउटा माइक्रोमैक्समा काम गर्दाखेरि यसो हाम्रो लन्च ब्रेकमा बाहिर लन्च गरिसकेपछि एक यतिकै राउन्ड लगाउन घुमिरहेको थिए सो मान्छेहरूले प्रोडक्ट लिएर आयो दुई तीनवटा प्रोडक्ट लिएर आयो कस्टमरलाई भन्यो कि सर तपाईले यो मानौ एक्जाम्पलको लागि चुरोट खानेहरुको लागि चुरोटको प्रोडक्ट थियो उसँग सोध्थ्यो तपाई कुन चुरोट खानुहुन्छ अच्छा यो चुरोट खानुहुन्छ ल हामीले एउटा नयाँ चुरोट प्रोड्युस गरिरहेको छौं यस इन्डियाको कुरा गरिरहेको छु म सो यो गुडगाउँ भनेको कता हो नि हारिकाले सोधिरहेछ यो त यही हो क्या न एक एक्जामिनेसनमा मेरो सिस्टर चाहिँ एउटा इन्कम ट्याक्समा हुन्छ कि यदि तपाईले यो ठाउँमा अर्न गर्नु भएको छ भने इन्डियामा यदि अर्न गर्नु भएको छ भने इन्डियामा ट्याक्सेबल हुन्छ बाहिर अर्न गर्नु भएको छ भने यदि नन रेजिडेन्ट हुनुहुन्छ भने त्यसलाई इन्डियामा ट्याक्स त नेपालमा पनि त्यस्तै प्रोभिजन छ त इन्डियाको ठाउँ भन्ने थाहा थिएन एक्जामिनेसनमा एउटा ठाउँ आयो पोन्डिचेरी भनेर उसलाई लाग्यो कि पोन्डिचेरी इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया त्यस्तै तपाईले क्वेशन गर्नु गुडगाउँ कहाँ है थोड़ा ज्योग्राफी देखना जरूरी है आपको मैडम सर ज्योग्राफी भी देखो आप पता करो कौन कहाँ पे होता है सो गुडगाउँ इज देयर इन इंडिया अब बोली कसैले भन्ला यो नवलपरासी कहाँ छ थोड़ा बहुत ज्ञान रखना पड़ा ना थोड़ा बहुत ज्ञान रखना चाहिए सो गुड़गांव इज देयर इन कौन से ज्योग्राफिक सर देखे अरे ज्योग्राफी का मतलब ज्योग्राफिक चैनल नहीं ज्योग्राफी हाँ ल सो जियो को नॉलेज होनु पर्ने हुन्छ नवलपरासी इंडिया में है अब हेर ये गब्बर भी है ना पता नहीं कौन सी जगह से आया है गब्बर पता नहीं सोले का गब्बर है कहीं और का गब्बर है सो नॉर्मली इवन प्रोडक्ट को इकोनोमिक इम्पोर्टेन्सलाई सर्वेबाट पनि थाहा पाइन्छ अब मानु चुरोटकै मैले जुन एक्जाम्पल लिएको थिएँ त्यो चुरोटको लागि उसँग सोध्यो तपाईँ कुन चुरोट खानुहुन्छ मेरो साथी नै कलिग बसेको थियो म यो चुरोट खान्छु ओके अब हेर्नुस् न मैले नयाँ चुरोट हामीले डेभलप गरेका छौं यो चुरोट तपाईँ खाएर भन्नुस् त अनि चुरोट उसले खायो अनि खाएपछि सँग सोध्यो भन्नुस् त यसको लागि तपाईँ कति पैसा दिन तयार हुनुहुन्छ हैन त उसले भन्ला कि जुन म अहिले कन्टिन्यू युज गर्छु त्यसको लागि 5 रुपैयाँ दिन्छु भने तपाईले दिएको चुरोट त राम्रो छ यसको लागि म 10 रुपैयाँ पनि दिन तयार छु यसरी मल्टिपल ठाउँमा सर्वे गरेर उसले चाहिँ प्रोड्युस गरेको प्रोडक्टहरुको भ्यालुएसन गर्छ राइट सो समटाइम्स आउटसाइडरकोबाट एक्सटर्नल फ्याक्टरबाट त्यो भ्यालुजहरु असाइन गरिन्छ भने समटाइम्स इन्टर्नल मान्छेहरुसँग सोधेर वर्करहरुसँग सोधेर इन्जिनियरहरुसँग सोधेर भ्यालु असाइन गरिन्छ हुँदै होइन विद्या ज्वाइन्ट प्रोसेस हुँदाखेरि अब यस्तो भयो नि समुद्र मन्थन भइराछ त्यसबाट थरीथरीको रत्नहरु निस्कियो अब सबैको इकोनोमिक भ्यालु सबैको इम्पोर्टेन्स सेम छ छैन नि अब भन चन्द्र अब समुद्र मंथन आपने देखा होगा ना समुद्र मंथन करते उससे फरक फरक आइटम निकला कामधेनु गाय पता नहीं अमृत क्या क्या निकला सबका सभी इम्पोर्टेन्स अलग अलग है ना प्रोसेस एउटै छ तर प्रोसेसबाट आउने आउटपुट कहिले काहीँ फरक फरक इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स को हुन सक्छ
है। त्यसैले वी क्यानट से कि सबैको एउटै हुनुपर्छ भनेर, राइट। त्यसैले प्रोसेस एउटै छ त, एउटा प्रोसेस यस्तो छ कि कम रिसोर्सेस खाएर प्रोडक्ट तयार भइरह होला, अर्को प्रोडक्ट यस्तो छ जसमा बढी रिसोर्सेस खाएर प्रोडक्ट तयार भयो। प्रोसेस एउटै छ तर कन्जम्सन अफ इकोनोमिक रिसोर्सेस अफ द जोइन्ट प्रोसेस हैज बीन मोर और लेस फर वन प्रोडक्ट एन्ड कम्पेयर टु अदर प्रोडक्ट, त्यो हुन सक्छ है। त्यसैले यो मेथडले चाहिँ त्यो इकोनोमिक भ्यालुलाई पोइन्ट भ्यालुको रूपमा युज गरिरहेछ। त्यसैले त यहाँ हेर्नुभयो नि, पोइन्ट भ्यालु असाइन गरिदियो, फिजिकल 2000 भए पनि त्यसको पोइन्ट भ्यालुज फरक भएपछि फरक तरिकाले हामीले यसलाई एलोकेट गर्यो। क्लियर, राइट। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, इस मेथड को चैलेंज करने के लिए दूसरा मेथड, कितने लोग WWE देखते हो बताओ तो, WWE कितने लोग देखते हो? उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक दूसरे को मारता है, तीसरा आ जाता है उसको मारने के लिए, है नहीं, चौथा उसको मैंने नाम ही देखा WWE, का मतलब इंटरटेनमेंट होता है ना भाई, फाइट थोड़ी ना होता है। तो लेकिन फिर भी होता तो क्या होता है, ए लाई बी ले हराउँछ अनि बी ले चाहिँ बी लाई सी ले हराउँछ, तो सबैले च्यालेन्ज गर्न अर्को आइरहेको हुन्छ अनि लास्टमा गएर जित्ता है कि नहीं। सो त्यो हुँदाखेरि तपाईले त्यसैले त्यही सिचुएसनलाई यहाँ हेर्नुस् है। पहिलो दुईटा मेथडलाई च्यालेन्ज गर्यो, तेस्रो मेथडले, अब भाई चौथा मेथड भी आ गया लाइन में, उसका नाम रहा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये बोला कि तुम सब लोग बकवास मेथड हो, तुम सबको दिमाग नहीं है, ऐसे तुम मेथड लेके आ गए हैं। हो गया भाई, हो गया, बहुत तुम लोग देखते हो, पता चल गया, इतना सारा नाम लिख रहे हो ना, सब हम देखना ही, चैट देखना ही छोड़ दिए। चलो इधर देखो, छोड़ो इधर देखो। द फोर्थ मेथड इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। यो मेथडले के भन्छ है, यो मेथडले के भन्छ कि तुम तीनवटा मेथड बकवास छ, तिमीले कन्सिडर गर्ने कुरा त कन्सिडर गर्दैनौ, आपसमा फाल्तुको कुराहरू गर्छ। यो मेथडले भनिरहेछ कि तिमीले पुरै जोइन्ट कस्टलाई यूनिट तराजू में बांटिरहेछ। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, ज्वाइंट कॉस्ट में दो तरह का कॉस्ट होगा, कुछ वेरिएबल कॉस्ट भी होगा, कुछ फिक्स्ड कॉस्ट भी होगा। फिक्स्ड कॉस्ट तो कभी भी फिजिकल यूनिट्स के ज्यादा कम होने से थोड़ी ना बढ़ता है। तुमने क्या किया, पूरे ज्वाइंट कॉस्ट को फिजिकल यूनिट के रेशियो में बांट दिया, फिजिकल आउटपुट के रेशियो में बांट दिया। लेकिन इस ज्वाइंट कॉस्ट में से वेरिएबल वाला पोर्शन ही तो प्रोडक्शन की वजह से इनकर किया गया होगा ना। फिक्स्ड डज नॉट हैव एनी डिपेंडेंसी, fixed cost does not have any dependency, any direct linkages with with units of production, तर variable cost does have। so त्यो सिचुएसन मा उसले के भन्यो, तिमीलाई variable cost र fixed cost जब दुईटा cost तपाईलाई थाहा छ भने पुरै joint cost लाई किन तिमी physical units को रेशियो मा बाट्छौ? यसलाई दुई टुक्रा गर, यसलाई चाहिँ physical units मेथड मा जसरी गरेका थियौ त्यसरी बाटिदेऊ है, फिजिकल युनिट्स मेथड में बाटिदेऊ। तर फिक्स्ड कॉस्ट लाई यसरी नबाट, यसलाई बाट्नको लागि तिमी के गर, कंट्रीब्यूशन को रेशियो में बाट। अरे वाह, ये कहां से नया चीज आ गया? दिस मेथड सेज you should not allocate total joint cost by applying any one method. Rather, what you do, variable portion of the joint cost to be allocated in physical unit ratio and fixed cost shall be allocated in the contribution ratio। अब contribution word तो सुन्नु भयो होला तपाईहरुले है, सुन्नु भयो होला? yes, sales minus variable, very good। यसले भन्यो ठीक छ, हम तुम लोगों ने जो मेथड बताया उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन थोड़ा सा तो यार मेथड में खामी है ना, थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है। तो ऐसा करते हैं, प्रोडक्ट जो भी है, मानो प्रोडक्ट ए बी सी 3 प्रोडक्ट है, इसका सेल्स वैल्यू दिया हुआ है, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, फिर क्या निकलेगा, कंट्रीब्यूशन निकलेगा, राइट। अब वेरिएबल कॉस्ट जो टोटल है, इस वेरिएबल कॉस्ट को बांटने के लिए इसको माने यहाँ फिजिकल यूनिट्स लेखे, फिजिकल यूनिट्स भनेपछि इक्विवेलेन्ट यूनिट्स को पॉइंट अफ व्यू मा लेख्नु है जहिले पनि। फिजिकल भने पनि दैट वुड बी फ्रॉम द
फ्रम द इक्विभलेन्ट युनिट्स पोइन्ट अफ भ्यू। त्यो मैले बारम्बार भनिराख्नु पर्दैन। कति युनिट छ यिनीहरू, यो युनिटको रेशियोमा र सेल्स भ्यालु मैले यहाँ लेखेँ, यो युनिटको रेशियोमा भेरिएबल कस्टलाई बाँड्दियो यिनीहरूको रेशियोमा। अब सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट कन्ट्रिब्युसन निस्किन्छ। त्यसपछि यस मेथडले के भन्यो, म के गर्छु, यो कन्ट्रिब्युसनको रेशियोमा यिनीहरूको रेशियोमा फिक्स्ड कस्टलाई बाँड्छु। टोटल फिक्स्ड कस्ट जुन दिएको छ, that we shall be allocating in the ratio of सब मार्कर खत्म हो रहा है धीरे धीरे, in the ratio of contribution। अब तपाईले भेरिएबल कस्ट बाँडिसक्नुभयो, तपाईले यतातिर फिक्स्ड कस्ट बाँडिहाल्नु भने टोटल जोइन्ट कस्ट एलोकेटेड वुड बी भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स्ड कस्ट, भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स्ड कस्ट। त्यसले अलिकता मसला के थप्दियो यस पुरै मेथडमा कि we shall be allocating, yes we shall be allocating these costs, but entire joint cost shall not be allocated in one basis, rather variable cost which has somewhere relationship with the physical units, कति युनिट्स प्रोड्युस गर्छ त्यसले गर्दा मेरो भेरिएबल कस्ट को भोल्युम को चेन्जेस भइरहेको हुनाले म भेरिएबल कस्टलाई त म फिजिकल युनिटको बेसिसमा बाँड्छु, तर फिक्स कस्टलाई म त्यो रेशियोमा बाँड्दिन, बल्कि त्यसको कन्ट्रिब्युसन निकाल्छु, कंट्रीब्यूशन को रेशियो में बांट, जो जितना फायदा दे रहा है उतना वेरिएबल कॉस्ट उठाएगा। ये वही बात हो गया ना कि जो जितना कमा रहा है उसको फिक्स कॉस्ट का उतना ही बर्डन उठाना पड़ेगा। फैमिली में पनि यस्तै कुरा हुन्छ नि, दुईटा छोरा छ भने घर को खर्च उठाउनु पर्यो भने जो बढी कमाउँछ उसलाई बढी खर्च गर भाइ, सानो भाइ चाहिँ कम कमाइरहेछ त्यसले कम खर्च गर्छ, मोरलेस त्यही कुरा भइरहेछ। यसको कन्ट्रिब्युसन बढी छ भने यसले फिक्स कॉस्ट को बढी पोर्सन बियर गर्छ, अनि सी को कन्ट्रिब्युसन कम छ भने त्यसले सी को कम बियर गर्छ है। बिन्दु कन्ट्रिब्युसन भनेको तपाईहरुले सुन्नुभयो होला, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट है। मैले सेल्स कतिमा गरे, भेरिएबल कस्ट। सो भेरिएबल कस्टले त कहीं न कहीं फिजिकल युनिट को प्रोडक्सन को भोल्युम को कारणले बढी र कम कस्ट हुने कारण त छ, त्यसैले भेरिएबल कस्टलाई हामीले फिजिकल युनिट को रेशियोमा बाँड्दियौ। तर फिक्स कस्टलाई बाँड्ने बेलामा पहिला कन्ट्रिब्युसन निकाल्नु छ भने प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी र प्रोडक्ट सी को कन्ट्रिब्युसन कति छ। कन्ट्रिब्युसन भनेको सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट है, त्यो कहीं न कहीं वन लेभल को प्रॉफिटेबिलिटी छ। त्यो प्रॉफिटेबिलिटी को बेसिसमा जसले बढी प्रॉफिट दिइराछ उसले फिक्स कस्ट को बढी पोर्सन, जसले कम प्रॉफिट दिइराछ उसले फिक्स कस्ट को कम पोर्सन अब्जर्भ गर्नुपर्छ। यस, यदि पर्सेन्टेज कम्प्लिट छ भने यहाँ फिजिकल युनिट्स नलेखेर तपाई इक्विभलेन्ट युनिट्स लेख्नुस् है। कहीं क्वेशनमा इक्विभलेन्ट युनिट्स लेख्नु पर्यो भने डिग्री अफ कम्प्लिटनेस को कुरा हो भने इक्विभलेन्ट युनिट्स लेख्नुस्। त्यो केसमा त्यो इक्विभलेन्ट युनिट्स को प्रोबेबल सेल्स भ्यालु के सेल्स भ्यालु होला, त्यही स्टेजमा त्यसलाई बेचिन गयो भने के सेल्स भ्यालु होला है। शीतला, प्राय हामी यस्ता क्वेशन्स गर्दाखेरि उले 100% कम्प्लिटेड क्वेशन्सहरु नै दिइरा हुन्छ, त्यसैले सजिलो भइहाल्छ। तर प्र्याक्टिकल लाइफमा तपाईले भनेको क्वेशन शाब्दिक हो। यदि इक्विभलेन्ट युनिट्स निकाल्नु पर्यो सर, पर्सेन्टेज कम्प्लिट थिएन भने त्यो बेलामा त्यो युनिट्स नै त्यो कम कम्प्लिट भएको प्रोडक्टलाई नै बेच्दाखेरि कति सेल्स भ्यालु आउँछ, त्यो इक्विभलेन्ट युनिटको रेशियोमा त्यसको कस्ट कति हुन्छ। फ्लो त्यही रहन्छ, फ्लो चाहिँ चेन्ज हुन्न। क्लियर? क्लियर छ शीतला? ओके ल, थ्यांक यू। तपाईहरुले नेक्स्ट एउटा क्वेशन यो मेथडबाट ट्राई गरेर आउनु होला। नेक्स्ट क्लासमा हामीले त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्दै अनि बाँकी अरु मेथडहरुतिर जानेछौं है। ल, टेक केयर, बाय।